बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास कंप्यूटर साइंसेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि नेटवर्किंग के बारे में है। और इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिए थे वो दो कंपोनेंट्स थे। नेटवर्क्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशंस जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। और उसके साथ ही हम लोगों ने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इसमें हमने टोपोलॉजीज़ डिस्कस की थी, जिसमें बस, स्ट्रिंग और मैश टोपोलॉजीज़ थी। आज हम प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेजर कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में एक्चुअल में ये एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम नेटवर्क बनाते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के। और ये वो रूल्स होते हैं, ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम फॉलो अप करते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर टास्क है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि प्रोटोकॉल्स क्यों हैं, क्यों बनाए जाते हैं। एक्चुअल में प्रोटोकॉल कहते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन को, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग किसी चीज़ को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम बाउंड होते हैं उस प्रोटोकॉल के, हमने उस प्रोटोकॉल को ब्रेक नहीं करना होता। अगर हम उस रूल को ब्रेक करते हैं उसके लिए हमें फिर नुकसान उठाना पड़ता है। The whole communication process is carried out in the different layers, where each layer perform one or more specific tasks. The internet also uses a layered communication model called the transmission control protocol or internet protocol. So TCP/IP transmission control protocol और internet protocol, इसको ये हमारे पास जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो है। एक्चुअल में इसकी डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें 7 लेयर्स भी हैं। हम यहाँ पर जो हमें बुक में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे पास 5 लेयर्स जो है वो मॉडल पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर, देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और देन फिज़िकल लेयर। ये हमारे पास 5 लेयर मॉडल है जो हमें यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। एडवांस में जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर आप इसको डिटेल में शायद आपको जो है वो पढ़ना पड़े, जहाँ पर 7 लेयर्स आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी जब आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करता है TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices. It consists of 5 layers as shown in the table 3.1. So the concept of layering can be explained with post office examples. Suppose you are in Lahore and you want to write a letter to your friend in Islamabad. After writing a letter, you insert it in an envelope, write address to your friend and it on it, and drop it in a mailbox. As there may be many people living at the same addresses, so you write the name of your friend on the envelope. Your nearest post office takes the letter to General Post Office in Lahore, which sends the same to General Post Office in Islamabad. Ultimately, the letter reaches the address and then to your friend. Then he or she can read the message and write the reply. Here I relate this example with the layer network model of TCP/IP. Assume that two persons are chatting using a computer network. सबसे पहले फिजिकल सिस्टम पोस्टल सिस्टम की बात करते हैं। तो पोस्टल के अंदर कहता है इन राइटिंग अ लेटर you consist only writing proper message without concerning about the name of the post office staff who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the detail of the mail delivery system. जबकि जो हमारे पास जो दूसरा लेयर्ड नेटवर्क मॉडल है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की हमें केयर करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कहता है वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ अ नेटवर्क, वायरलेस और वायर्ड। अब आपको इससे गर्ज नहीं होती है, आपने जो पार्सल सेंड करना है, जो मैसेज सेंड करना है, वो तार में से जाएगा या वाईफाई के थ्रू जाएगा या मोबाइल डाटा के थ्रू जाएगा। मीन्स आपको नेटवर्क का जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। यू आर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट उसके बाद कहता है यू सिंपल पुट द इट एन एनवेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस।
जबकि यहाँ पर क्या कहता है एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइसेस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। ये हमारे पास आ जाता है कि जब हम लेयर नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं तो लेयर नेटवर्क के अंदर हमारे पास मैसेज फिर जब सेंड करते हैं तो हम इससे गर्ज नहीं रखते कि नेटवर्क हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद कहता है हमारे पास जो मेज आ जाती है वो ये है कि कहता है you write a sender to receiver information over the envelope and put it in the letterbox. If the address is incompleted, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. और इसका यही काम जो है जब नेटवर्क के अंदर हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर तो ये टास्क जो है ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है। So transport layer establish connection between the client and server. It tries to send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, then it inform the application program. If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach is at the destination. जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर हम ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हमारे एज से एक मैसेज जो है वो डिलीवर हो गया सेंड हो गया तो फर्स्टली हमें एक सिंगल टिक जो है वो नज़र आता है। फिर अगर जिसको हमने सेंड किया है वो रिसीवर भी नेटवर्क पर मौजूद है तो वही टिक जो है वो डबल टिक हो जाते हैं कि मीन्स आपने सेंड भी कर दिया और उधर रिसीवर ने उसको रिसीव भी कर लिया। फिर अगर वो रिसीवर उसको रीड कर लेता है तो फिर वो टिक जो हैं वो ब्लू हो जाते हैं जो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि आपके रिसीवर ने मैसेज को रीड भी कर लिया। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का ही सारा टास्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा था। कहता है द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ द इज मैंशन हु कैन ओपन द एंड रीड द लेटर। और सेम यहाँ पर जो है वो एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडिड विद मैसेज हेडर for indication of the specific application at destination. A port number is used to identify the application which can accept a message. A letter is moved over the other city Islamabad in example by road or by air। और ये इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये टास्क परफॉर्म करने वाली नेटवर्क लेयर होती है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करवाती है। यहाँ पर आप प्रोग्राम रनिंग इन ऑन अ नेटवर्क लेयर मूव्स the data on the other network, so a chat message or transfer to other Wi-Fi router to your friend from where it is delivered to your friend and he or she can see see it on the screen। ये हमारे पास इस तरह से जो है वो नेटवर्क के थ्रू डाटा हमारे पास शेयर होता है। हैंडलिंग अ लेटर इज़ सेम आइदर इफ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ्स ईड कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट एक्सेट्रा जो भी हमारे पास होगा। सेम इसी तरह नेटवर्क हैंडल ऑल मैसेज इन द सेम वे आइदर इफ़ दे आर ईमेल्स पिक्चर और वॉइस मैसेज एक्सेट्रा कुछ भी हो वो डाटा ट्रांसफ़र करवा देगा। बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। और ये टास्क नेटवर्क के अंदर परफॉर्म करती है डाटा लिंक लेयर। सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer send message from your computer to the Wi-Fi router. For your letter delivery, there is usage of road, train, tracks and may be a airline। और यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म करने वाली नेटवर्क के अंदर फिजिकल लेयर है इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज टू कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग एक्सेट्रा। इस तरह से हमारे पास डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। ईच लेयर एड्स सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कॉल्ड द हेडर विद द डाटा रिसीव्ड फॉर्म अ लेयर अबाउट इट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज कॉल्ड द पेलोड इज हेड inside the header at each layer. Like a letter is hidden inside an envelope, this is called the इनकैप्सुलेशन। एक डाटा को जो है वो रोल ऑन कर देना पैक कर देना इनकैप्सुलेशन कहलाता है।
एक MCQs जो है वो इजीली बनाया जा सकता है। सो प्रोटोकॉल्स इन TCP IP सूट्स, जो TCP IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है FTP, जिसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ स्टैंडर्ड TCP IP प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस of transferring files from one computer to another. For example, if you want to transfer a document file to a remote computer, then we can use this protocol as shown in the figure 3.14. So FTP protocols हम फाइल, क्योंकि फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए हम FTP प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं वो है HTTP, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Hypertext Transfer Protocol is a protocol used by World Wide Web to transfer web pages between a client and a web server. A web server is also an HTTP server. We use this protocol while browsing internet for secure data transfer. We use HTTPS. और उसी तरह हमारे पास एक और नेटवर्क जो है प्रोटोकॉल पर इस्तेमाल किया जाता है वो है SMTP, जिसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। So simple mail transfer protocol is a standard protocol to transfer an email। और सेम इसी तरह जो ओल्ड ईमेल का हमारे पास प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता था वो है पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क के अंदर TCP IP सूट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट हम एड्रेसिंग के बारे, नेटवर्क एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।